Hello students, welcome to the next lecture on the memory based question. Today I will explain you part 13 of the CSN at July 2026. Myself Dr. Harishkar, you can follow and subscribe my YouTube channel. The question that I have chosen for the today's lecture is, you can see that the same question I already uploaded in the part 11 of the memory based question. अब आप कहोगे सर आपने दोबारा क्यों अपलोड करे सॉल्यूशन? Because of the students demand. 15 minutes ago, one of the students has requested me, sir, kindly give the solutions by using the formula of the pi in the particular integral. तो pi आपको कैसे निकालते हो? 1/, ऐसे करके सॉल्व करते हो. And the students demand, sir, kindly solve the solution in this manner. And you can see it's a part 11 where you can find the second method how you can solve this question. But एक बात हमेशा याद रखो, whenever you are finding the particular integral in this form x y cube, and make sure this quantity must be constant. ये तो constant होना चाहिए ना, but you can see the coefficients are not a constant. So your target is to firstly convert the given partial differential into the constant coefficient. So how you can do that? I can convert into the Cauchy-Euler equation. तो कॉची आइलर में क्या होता है, अगर डी स्केयर है तो इसके साथ एक्स स्केयर होना चाहिए. नाउ इट्स अ वाई वाई, तो आप इसको पहले वाई से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को. सो दैट इक्वेशन बिकम्स वाई स्केयर डी प्राइम स्केयर माइनस 3y इंटू डी प्राइम ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स वाई की पावर 4. Now you can see the left hand side is a Cauchy-Euler equation. So how you can solve that? I can take x is equal to e की power x, y is equal to e की power capital Y. So your given differential equation becomes d star d prime minus of 3d prime into z is equal to e की power x plus 4 capital Y. Now you can find the particular integral. So what is the particular integral? 1/, ये कितना आ जाएगा, d प्राइम स्क्वायर माइनस 4 इंटू डी प्राइम e की पावर कैपिटल x प्लस 4y. I can substitute capital D to be the 1, D prime to be 4. So clearly say it's a 0/0 form. So I can multiply with the y because it's a D prime and differentiate that. 2D prime minus 4 e की power x plus 4y. यही तो बनेगा ना आपके पास. I have to multiply with the y instead of the x because आपका D prime है. Now again I can substitute the value. So it is a 8 minus 4 is 4, y over capital Y over 4 e की power x plus 4y. Now you can convert into the small x and small y. So capital Y will be log of y divided by 4. E की power x is a x, e की power y 4, that will be y की power 4. Now you can compare them. What is the answer? A is the coefficient of the x की power 1. B is the y की power 4. C is the power of y की power 1. So what is the answer of the A plus B plus C? Again the right answer is 6 is the correct answer. Fine. तो आप कमेंट करके बताइए, जब भी आप कोई कमेंट करते हो आई ऑलवेज शो द कमेंट्स, एंड अगर आप रिक्वेस्ट करोगे आई विल अपलोड डेफिनेटली द सॉल्यूशंस इन द डिफरेंट मेथड्स. अगर आपने पार्ट 11 नहीं देखा, यू कैन सी द सेकंड मेथड हाउ यू कैन सॉल्व दिस सेम क्वेश्चन इन अनदर वे. उम्मीद करता हूं आप वीडियो को लाइक करोगे और अपने कमेंट्स इस वीडियो पे पुट अप करोगे. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स. यू कैन सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल्स and you can watch interested to watch the more videos very soon. Best of luck students. Happy learning.